Jai Swaminarayan, myself Kumudini Nalaude, Atmi Green School, Standard 4th. It's time to revise the GK. So I think everyone knows the syllabus. ओके हमने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, तो आज से मैं क्या करूंगी, रिवीजन स्टार्ट करूंगी. आई थिंक यू हैव रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय प्रिंसिपल मैम. तो ये जो वैल्यू एजुकेशन और जीके के जो भी पेपर्स होंगे वो कैसे होंगे, गूगल फॉर्म से, गूगल फॉर्म्स में एमसीक्यूज में होंगे, है ना. तो डोंट वरी, बी रिलैक्स, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सिलेबस भी आपको मिल गया है और 40 मार्क्स का पेपर है ना, और एमसीक्यूज वाला आएगा, तो ज्यादा टेंशन भी मत लेना, ठीक है. देखो अभी 3 मिनिमम 2-3 पीरियड्स तो जरूर होंगे अपने, तो उसमें मैं पूरा आपको अच्छे से रिवाइज कर दूंगी. लेकिन आपको स्टडी भी तो करना है ना. अच्छे से स्टडी करो, इतना डिफिकल्ट नहीं है. रिवीजन अच्छे से करोगे, वीडियो देखोगे तो आराम से आपको मैक्सिमम स्कोर मिल जाएगा, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. फाइन. तो फर्स्ट इज वाइल्ड लाइफ. Wild animals and birds are most comfortable in their own homes or habits. Forests, jungles, oceans, caves, and trees. That is where we should leave them. Identify these creatures that look so relaxed in their natural homes. So see here, the birds or the animals, they are in their natural homes. Bulbul, then herons, pirans. These are type of fish. This is the birds. Some birds are found on the trees and some near the aquatic places. Then gore, beaver, nilgai, and this is the Vadagar. So we have already studied about these animals. So आपको क्या करे, देखो आपको एमसीक्यूज में आपको इसका पिक्चर दिया जाएगा, है ना, और उसके नीचे इनके नाम्स लिखे जाएंगे. तो आपको जो जो भी एनिमल्स या जो भी बर्ड करेक्ट है, तो उसके उस पे आपको क्या करना है, उस एमसीक्यूज में वो चॉइस करना है, ठीक है. तो ये समझ में आया कैसे करना है हमें. ना तो हमें क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, ना कुछ ट्रू फॉल्स या फिर एमसीक्यूज टाइप, मतलब आपको इसमें से करेक्ट वर्ड्स चूज करना है. मैच द कॉलम आ सकता है, ठीक है. नेक्स्ट, लाइफ इन द ओशन. नेम दिस क्रिएचर फाउंड इन वाटर बॉडीज. सो वाटर बॉडीज, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक एंड ओशंस, राइट. सो यहाँ कुछ एनिमल्स दिए हैं जो मोस्टली वी हैव फाइंड इट इन द ओशंस. So first, everyone know about it. It is a crab. So let's see. Life in the ocean. Name this creature found in the water bodies. ठीक है. So it lives in and by sea, walks and swim sideway and can carry its own house. So it is crab. Then this. A dangerous hunter in the sea. It has deadly teeth and huge jaw. देखो इसका jaw भी दिख रहा है हमें, है ना. Which is this fish? It is shark. Although it lives under the sea, it is a mammal, needs air to breathe and feeds baby milk. It's a whalefish. Then can you see this aquatic animals also? It is found mostly in the oceans, right? Unscramble the letters and name these creatures. So see this one. So they are prawns, then the jellyfish and seahorse. Okay, now next chapter, landmarks. So some famous places, pics are given and you have to write their names. So first one, so we are in the syllabus I have told the information about these all famous places, right. So first is sea, that is let's see what is sea. Okay, I think in the picture I forget it. You have to the picture is not complete, so please open page number yeah, it's page number 10. Okay, so it's I will show the pic first. Okay, can you see it? The first is sea, that is Sanchi Stupa, Madhya Pradesh, India. Then next picture is of D, that is Golden Gate Bridge of San Francisco, USA. Then third picture of F, that is Westminster Abbey, London in UK.
Then next picture. The fourth picture is of B, that is Arc de Triomphe, Paris in France. Then fifth one, yeah, it's a very famous. Okay, it is Colosseum, Rome, in Italy. Then last one but not least, it is the Stonehenge. Uh, Stonehenge, Wiltshire in UK. Okay, these are the famous landmarks, and we have already studied why now this each structure is famous for what. Okay, so let's start the next chapter, that is tribes of the world. 1 second, huh? Okay, tribes of the world. There are thousands of tribes in the world. Each tribe has its own language, customs, dresses, and eating habits. We should respect them, not not disturb them. Name the countries where you will see most of these tribes. अब देखो इसके ट्राइब्स यहाँ दिखे, जैसे मसाई केनिया में मिलते हैं हमें, तो ना तो मैं उनके बारे में पूछूंगी, आई विल जस्ट गिव यू पिक एंड राइट which tribes this pic belong to. तो कौन से ट्राइब्स ये शो करता है, इट इज मसाई. तो मैं तीन ऑप्शन दूंगी आपको, मैओरीज, जावारा एंड मसाई. सो विच इज द करेक्ट वन, मसाई. तो यू हैव टू टिक मसाई. आ गया समझ में? तो अच्छे से पिक्चर ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड कर लेना. सो मसाई वी विल फाइंड इन कैनेडा. Then Jarawa in India. Then Maoris in New Zealand and Aborigines in Australia. Now see here, हम ऐसे भी पूछ सकते हैं. On A column there are tribes and in the B column I will give the names of the countries and you have match the pairs. Okay, so it is easy. अगर आपको वो ट्राइब्स और उसका कंट्री मालूम हो तो वो बहुत इजी रहेगा आपके लिए, है ना? And only 1, 2, 3, 4 are there, right na? Okay, shall we start the next one? Okay, it's about the science now. A computer control object that does not that does many of the job which human can do, it is called a robot. Okay, some letter alphabets are given and we have to complete that word, that is robot. When we use gadget or machine that does not need to have wire connecting it to anything, we say it is wireless. When a program or an event is shown or played for people who are far away to view or listen to it, we say it is broadcast. Film that have character and things that look real but are not are called animated movies. Now next, there are cameras in which you do not have put any film. The picture may be viewed instantly on a small inbuilt screen and deleted if not required. These pictures may then transfer on a computer or printed. These are called digital cameras. Right? Now next, put the tick in the box. Put the tick in the box for the things that have already been made. तो नीचे कुछ आपको इन्वेंशन बताए हैं, तो इसमें से कुछ इन्वेंशन है वो ऑलरेडी मेड है, मतलब उसका ऑलरेडी इन्वेंशन हो चुका है, वो प्रिपेयर्ड है. तो जो है अगर ऐसे सच में है तो उसको टिक कीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अ वॉच दैट कैन वर्क. सो यस, अ मोबाइल, अ कैमरा, a cat speaking to, though he a car that can